Hello everyone. In the previous chapter I explained you about probability based on points, what is probability and how to solve probability based on points. Today I will explain you how to solve probability question based on cards and dice. So सबसे पहले now let us start with dice. Okay, when a dice is thrown at once, एक बार अगर आपने dice फेंका तो first of all find out how many total outcomes occurs. Let this be denoted by S. When a dice is thrown, how many total outcomes? It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6 की power 1, that is 6. Okay? When a dice is thrown, total outcomes occur 1, 2, 3, 4, 5, 6 and in total 6. Now the question is that what is the probability of getting an even number? What is the probability of getting an even number? E is the even, getting an even number. So first find out how many even numbers are there in the total sample space. So total even numbers is 3. So number of favorable outcomes three and total outcomes 6. The probability of getting an even number is clear? Probability of getting an even number is 1 upon 2. Always write the answer in simplest form. Today I want to explain one more thing. Okay, what is the range of the probability and how many types of event in probability? So it's clear to you. Now how to solve the question based on dice? I will take one more example afterward. सबसे पहले टाइप्स ऑफ इवेंट्स नाउ क्लियर. श्योर इवेंट, impossible event and uncertain event. There are three types of event in probability we have to study. श्योर इवेंट यानी जो बिल्कुल श्योर है कि होता ही है. अगर आज टुडे मंडे है तो मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग दैट टुडे इज मंडे. तो श्योर है कि टुडे इज मंडे. अगर टुडे इज ट्यूसडे है तो श्योर है कि टुडे इज ट्यूसडे. या वेडनेसडे है तो श्योर है कि टुडे इज वेडनेसडे. व्हेन आई आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द डे, अबाउट अ पर्टिकुलर डे, तो वो श्योर है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1. हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी क्योंकि वो एक ही दिन है. आउट ऑफ सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स भी 1. और जो श्योर है कि टुडे इज मंडे है, टुडे इज ट्यूसडे, वो भी 1. तो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 1, दैट इज 1. इम्पॉसिबल इवेंट जो घटता है नहीं, कुछ हैपनिंग ही नहीं हो रही, उसके बारे में पूछ रहे हैं. जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में पूछ रहे हैं. Suppose when I ask a question, what is the probability of getting a natural number between 2 and 3? तो 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं. 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर. तो there is no such events. So probability of such events is 0. When I ask a question, के probability of what is the probability of getting number of fishes on a tree? तो ये भी impossible event है. So such events are called impossible event and the probability of such event is 0. And the most important thing is uncertain event. The rest are uncertain event. It will rain today. What is the probability of getting 100% marks in maths? So they are not, all such events are not sure events. Uncertainty है उसमें. इसलिए the probability of such events always less than 1. Less than 1. So what is the probability of range? Greater than equal to 0 to less than equal to 1.
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो श्योर हो, चाहे इम्पॉसिबल हो, चाहे अनसर्टेन हो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो उसकी रेंज आएगी या तो 0 या 1 से 0 से ज्यादा कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं. Probability of any event always greater than equal to 0 but less than equal to 1. This is the range of probability. चाहे आप 9th क्लास में सॉल्व करें, चाहे 10th में, 11th, 12th, जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, the range of the probability is this only. So 3 types of event: sure event, impossible event and uncertain event. Now then I am going to solve the question based on cards and dice. Suppose I am taking the question on cards. A pack of cards. Pack of cards. How many cards are there in one pack? 52 cards. 52 cards, and these 52 cards is divided into 4 decks. 4 deck, जिसे suit भी बोलते हैं, SUIT, suit. 4 suit में डिवाइड करते हैं. पहले स्पेड एक, then club, then heart, then diamond. डायमंड यानी ब्रिक, क्लब और फ्लावर. हिंदी में बताऊंगा मैं. स्पेड यानी काला पान, क्लब फ्लावर यानी चिड़ी जिसे बोलते हैं काले पान के फूल के पत्ती, हार्ट लाल पान और स्वीट डायमंड जो होता है होते हैं ब्रिक भी बोलते हैं, ईट. वाई एम राइटिंग स्पेड एंड क्लब टुगेदर, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब होते हैं. ये दोनों मिला के टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड्स. और 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं. ये मिला के दोनों टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, रेड कार्ड्स टोटल. तो हाउ मेनी टोटल ब्लैक कार्ड्स इन अ पैक? 26. And how many total red cards in a pack? 26. ठीक. अब in each and every deck there are 13 cards. Out of one is ace, one is king, one is queen, and one is jack. And the rest 9 are numerical numbers. That is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. These are the numerical cards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 नहीं होता, 1 numerical card नहीं होता. तो आपने देखा होगा. 1 is ace, 1 is king, 1 is queen, 1 is jack in every deck. तो टोटल ace कितने हो गए deck में? तो pack में पूरे. In one pack, how many aces are there now? 4. 4 किंग हो गए, 4 क्वींस हो गई और 4 जैक हो गए. जैक का दूसरा नाम नेव भी है, KNAVE, नेव, गुलाम. जैक. 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक. बहुत ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूं. तो दीज कार्ड्स आर कॉल्ड ऑनर कार्ड्स. ऑनर इज्जत वाले पत्ते. तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 are honor cards. 16 are honor cards. अब एक मोर ध्यान से सुनो. इन एस आपने देखा होगा, एस में फोटो नहीं बना रहता, एक मोनो बना रहता है, मोनो. अब बाकी किंग और क्वीन और जैक में फोटो बना रहता है. किंग में राजा का बना रहता है, क्वीन में रानी का बना रहता है, जैक में गुलाम का बना रहता है फोटो. तो फेस कार्ड काउंट करो. तो फेस कार्ड्स में आप एस कार्ड हटा दो, 4 एस कार्ड हटा दो. तो 16 में से ये 4 एस कार्ड हट गए जिसमें फेस नहीं है बिल्कुल. तो 4, 4, 8, 4, 12. तो फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके टोटल? 12 कार्ड्स. 12 फेस कार्ड्स हो गए. तो पूरे पैक में इन
in how many in a pack of 52 cards, how many honor cards are there? 16. And how many face cards are there? 12. बहुत ध्यान से देना. In face card don't count aces. तो जब honor cards की बात होगी तो total cards, total favorable cards आएंगे 16. और when we talk about face cards तो total favorable cards आएंगे, total number of favorable cards आएंगे 12. Total 26 black cards and total 26 red cards in a pack of 52 cards. न्यूमेरिकल कार्ड्स कितने? 9 4 36. 9 इन स्पेड कार्ड्स न्यूमेरिकल, 9 क्लब कार्ड्स, 9 हार्ट कार्ड्स, 9 डायमंड. तो टोटल 9 4 36 न्यूमेरिकल कार्ड्स. 36 न्यूमेरिकल कार्ड्स होंगे. If you want to write down this, please note it down. Then the question now we have to solve based on this flow chart. It's clear? Now the question is, find the probability of getting a heart of a 2 of heart. Question सुनो ध्यान से. What is the probability of getting a 2 of heart from a pack of 52 cards? Write down the question. What is the probability of getting a 2 of heart from a pack of 52 cards? यानी from a pack of cards भी बोले तो it's clearly that number of cards in a pack is 52. So what is the answer? Question is 2 of hearts. क्या समझे आप इससे? 2 of hearts यानी लाल पान की दुग्गी. The question is to be asked about one card that is लाल पान की दुग्गी. 2 of heart means 2 कार्ड नहीं पूछ रहा कि 2 लाल पान के कार्ड. No. The question is what is the probability of getting 2 of heart? तो 2 of heart तो लाल पान की दुग्गी. Only one card is there. So the answer is 1 upon 52. Total number of favorable outcomes 52 because there are total 52 cards in a pack. And the question is about 2 of heart and there is only one card is there. So the question is clear. So please read the question properly and then give the answer. Clear the answer is? Okay. Now the next question based on card is, from a pack of 52 cards, what is the probability of getting red card? What is the probability of getting red card? So how many red cards are there? 26 red cards are there. So answer will be 26 upon 52 and when you simplified it, the answer is 1 upon 2. If the question is what is the probability of getting red queen? So how many red queens are there? 1 red queen of heart and 1 of diamond. We are talking about not queen, we are talking about red queen. So only 2 red queens are there in a pack of 52. So answer will be 2 upon 52 and when we simplified it, the answer is 1 upon 26. So many questions are based on the cards in your NCERT book. Please solve it properly and we will continue our lecture in the next video in which we have to solve the question based on dice and other topics. Thank you very much.